Hello everyone. In a previous class, we will discuss about what is semiconductor material, extrinsic and intrinsic semiconductor material, and p-type and n-type semiconductor material. So, this is the lecture number 2, subject analog electronics. So, in this lecture, we will study about what is the PN junction diode, introduction of the PN junction diode, how it is work, biasing of the PN junction diode. We will study about 3 biasing of the PN junction diode like 0, forward biasing and reverse biasing. Next we will further move on the IV characteristics of the PN junction diode. Means the characteristics draw between the two axes, current axis and voltage axis. So this is called the IV characteristics of PN junction diode. Next we will move on the applications of the PN junction diode in a different areas. So let's start. With PN junction diode and the introductory part of the PN junction diode and how it is worked. A semiconductor diode is a PN junction diode. It is a two-terminal device which conduct current only one direction. It means when we can add the N-type and P-type semiconductor material, so we can make a PN junction diode. A PN junction is an interface or the boundary between the two semiconductor material type, namely the P-type and N-type inside a semiconductor. It means हम PN junction diode को कैसे बनाते हैं. प्रीवियस वाली क्लास में हमने देखा कि P-type semiconductor material हम कैसे बनाते हैं और N-type semiconductor material हम कैसे बनाते हैं और majority carrier and minority carrier क्या होते हैं. तो PN junction diode बनाने के लिए हम P और N मटेरियल को किसी टेक्निक के थ्रू अगर ज्वाइन कर देते हैं तो उससे जो हमारा जंक्शन क्रिएट होता है उसको हम PN junction diode बोलते हैं. So PN junction diode जो होता है it is a two terminal unidirectional uncontrolled device. ये हमारा PN junction diode का proper definition हो जाएगा. So the P side or the positive side of the semiconductor has an excess of hole or hole are positively charged, and the N side or the negative side has an excess of electrons. In a semiconductor, the PN junction is created by the method of doping. तो डोपिंग के थ्रू हम PN junction diode को क्रिएट करते हैं. इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो P साइड होता है उसमें मेजॉरिटी कैरियर जो होते हैं वो होल्स होते हैं, और प्रीवियस वाली क्लास में हमने डिस्कस किया है कि जो होल्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होता है. सिमिलरली जो N साइड होता है हमारा, उसमें जो मेजॉरिटी कैरियर होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर मतलब जो ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है उसको हम मेजॉरिटी कैरियर बोलते हैं. माइनॉरिटी कैरियर जो कम अमाउंट में पाया जाता है उसको माइनॉरिटी कैरियर हम बोलते हैं. तो इन केस ऑफ N टाइप्स या N साइड सेमीकंडक्टर द मेजॉरिटी कैरियर इज इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि इट्स अ मोर नेगेटिवली चार्ज. So this is the symbol of semiconductor diode or PN junction diode. There is a two-terminal device, we can say previous. This is a two-terminal device. The terminal name is anode and cathode. So first is a conventional diagram, second is a symbolic diagram. And the conventional current flow also indicate in this diagram. The figure represents the symbol of PN junction diode, which symbolized the direction of the current. By applying the external voltage V, we can vary the potential barrier. So next is a formation of PN junction. As we know, if we use different semiconductor material to make a PN junction,
there will be a grain boundary that would inhibit the movement of the electrons from one side to the another side, while scattering the electrons and the hole, and thus we use the process of doping. We will understand the process of doping with the help of some example. Let us consider a thin p-type silicon semiconductor sheet. If we add a small amount of pentavalent impurities to this, a part of the p-type silicon will get converted into the n-type silicon. This sheet will now contain both p-type region and n-type region, and a junction between these two regions. The process that follow after the formation of the PN junction area are two types: diffusion and drift. As we know, there is a difference in the concentration of the hole and electron at the two sides of the junction. The holes from the p side diffused to the n side, and the electrons from the n side diffused to the p side. This gives rise to a diffusion current across the junction. Continue with the formation of PN junction diode. Also, when an electron diffused from the n side to the p side, an ionized donor is left behind on the n side, which is immobile. As the process goes on, a layer of positive charge is developed on the n side of the junction. Similarly, when a hole goes from the p side to the n side and the ionized acceptor is left behind in the p side, resulting in the formation of a layer of negative charge in the p side of the junction. So this is a diagram for PN junction. P-type material has the majority carrier holes, and n-type material have majority carrier is electrons. And in this diagram you can see the depletion region or depletion layer in this diagram represented by yellow color. The region of the positive charge and the negative charge on either side of the junction is termed as the depletion region. Due to this, the positive space charge region on the either side of the junction and the electric field direction from the positive charge toward the negative charge is developed. Due to this, electric field and electron on the p side of the junction move to the n side of the junction. This motion is termed as the drift. Here we see that the direction of the drift current is opposite to that of the diffusion current. Now the next topic is a biasing of PN. So there are two operating regions and three possible biasing conditions for the standard junction diode. These are: number one, zero bias. What's the meaning of zero bias? No external voltage potential is applied to the PN junction diode. So there is two operating region. It means इसमें हमारे पास दो operating region हैं, P type और N type. There is two operating region and there are three possible biasing condition और तीन possible biasing condition होती हैं. जो पहला होता है वो zero biasing, second one is a reverse bias and third one is a forward bias. So we will discuss all these three biasing. Number one is called the zero bias. नो एक्सटर्नल वोल्टेज वैन, मतलब जो हम कोई एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं लगाते हैं पीएन जंक्शन डायोड में, तो उस बाइसिंग को हम बोलते हैं जीरो बाइस. सेकंड जो होता है वो होता है रिवर्स बाइस. रिवर्स बाइस, द वोल्टेज पोटेंशियल इज कनेक्टेड नेगेटिव टू द पी टाइप मटेरियल एंड द पॉजिटिव टू द एन टाइप मटेरियल अक्रॉस द डायोड, विच हैज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द पीएन जंक्शन डायोड विड्थ. तो रिवर्स बाइस का मतलब क्या होता है? जब हम डायोड के पी टर्मिनल को या पी साइड को नेगेटिव, बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो उसको हम रिवर्स बाइस बोलते हैं. नेक्स्ट मूव करते हैं फॉरवर्ड बाइस. द वोल्टेज पोटेंशियल इज कनेक्टेड पॉजिटिव
to the P side material and the negative to the N side material across the diode, which has the effect to decreasing the PN junction diode width. रिवर्स बाइस में क्या होता है, जो हमारा डायोड का विड्थ होता है वो इंक्रीज होता है, और फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है, डायोड का विड्थ जो होता है वो डिक्रीज होता है. तो फॉरवर्ड बाइस अगर हमें सिंपल लैंग्वेज में बताना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरवर्ड बाइस, तो व्हेन द पी टाइप या व्हेन दी पॉजिटिव टर्मिनल जो है पी टाइप मटेरियल का, जब हम मटेरियल को पॉजिटिव साइड से कनेक्ट कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बाइस. So we will move the detail for zero biased PN junction diode. When a diode is connected in a zero bias condition, no external potential energy is applied to the PN junction. However, if the diode terminals are shorted together, a few holes, majority carrier, and the p-type material with enough energy to overcome the potential barrier will move across the junction against this barrier potential. This is known as the forward current and referred as IF. Likewise, hole generated in the n-type material, minority carrier, find this situation favorable and move across the junction in the opposite direction. एक्चुअली सारी बाइसिंग के लिए हम करते क्या है, पीएन जंक्शन डायोड को एक डीसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं. ठीक है, तो जब डीसी सोर्स हम नहीं लगाते हैं उस कंडीशन को जीरो बाइस बोलते हैं, और जब पी को हम पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं इस कॉल फॉरवर्ड बाइस, एंड पी को जब नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं इस कॉल रिवर्स बाइस. This is known as the reverse current and referred as IR. This transfer of electrons and hole back and forth across the PN junction is known as diffusion, as so below. Now next is a zero wise continue. The potential barrier that now exists discourage the diffusion of any more majority carrier across the junction. However, the potential barrier help minority carrier, means few free electrons in the p region and few holes in the n region, to drift across the junction. So this is all about the zero biased of PN junction. Then an equilibrium or balance will be established when the majority carrier are equal and both moving in an opposite direction, so that the net result is zero current flowing in the circuit. When this occurs, the junction is said to be a state of dynamic equilibrium. The minority carrier are constantly generated due to the thermal energy, so this state of the equilibrium can be broken by raising the temperature of the PN junction, causing an increase in the generation of the minority carrier, thereby resulting in an increase in leakage current, but an electric current cannot flow since no circuit has been connected to the PN junction. Second is a reverse bias PN junction. When a diode is connected in a reverse bias condition, a positive voltage is applied to the N-type material and a negative voltage is applied to the P-type material. It means P connected negative side, so this call is reverse bias. The positive voltage applied to the N-type material attract electron towards the positive electrode and away from the junction, while the hole is the P-type and are also attract away from the junction towards the negative electrode.
The net result is that the depletion layer grow wider due to a lack of electrons and hole and present a high impedance path, almost an insulator. The result is that a high potential barrier is created, thus preventing current from the flowing through the semiconductor material. रिवर्स बाइस में क्या होगा, जब हम बैटरी के प्लस से नेगेटिव को कनेक्ट करेंगे या एन टाइप को कनेक्ट करेंगे, एन टाइप मटेरियल को कनेक्ट करेंगे, तो एन टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी कैरियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंक्शन की साइड मूव ना करके इलेक्ट्रोड की साइड मूव करेंगे, है ना, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव है तो उसी साइड मूव करेंगे। सिमिलर होगा मेरा पी टाइप साइड भी, क्योंकि पी टाइप हमने नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है, तो पी के मेजॉरिटी कैरियर क्या होते हैं, आपके होल्स होते हैं, तो होल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए वो जंक्शन की साइड मूव ना करके जंक्शन की अपोजिट साइड्स मूव करेंगे, जिससे कि हमारा जो डिप्लेशन रीजन है वो बढ़ जाएगा, वाइडर हो जाएगा और ग्रो हो जाएगा। सो इंक्रीज इन द डिप्लीशन लेयर ड्यू टू द रिवर्स बाइस। क्यों होता है वो हम देखते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम डायग्राम में देख पा रहे हैं कि हमारा जो एन रीजन है, एन रीजन हमने कनेक्ट किया हुआ है बैटरी के पॉजिटिव से, तो एन रीजन जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी होते हैं, ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंक्शन की साइड मूव ना करके इलेक्ट्रोड की साइड मीन्स बैटरी की साइड मूव करेंगे, क्योंकि अट्रैक्शन होगा। सिमिलरली हमने पी रीजन को जो है, पी टाइप मटेरियल को, जिसमें कि मेजॉरिटी कैरियर जो होते हैं वो होल्स होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, उसको नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है, तो होल्स भी सारे के सारे जंक्शन की अपोजिट साइड मूव करेंगे, और क्योंकि बैटरी का नेगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन होगा, तो इस कंडीशन में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर है मेरी वो बढ़ जाएगी। ये इसका प्रैक्टिकल डायग्राम है, इसका इलेक्ट्रिकल डायग्राम भी आपको दिख रहा है, दिस द सिंबॉलिक डायग्राम। और डायोड एक्ट लाइक एज अ स्विच, तो इसमें जो है वो ओपन स्विच की तरह काम करेगा। रिवर्स बाइस कंडीशन में डायोड एक्ट एज अ ओपन स्विच। This condition present a high resistance value to the PN junction and practically zero current flow through the junction diode with an increase in bias voltage. वोल्टेज को हम बढ़ाते जाएंगे फिर भी जो हमारा करंट फ्लो है वो जीरो रहेगा। However, a very small leakage current does flow through the junction which can be measured in a microampere. One final point, if the reverse bias voltage VR applied to the diode is increased to the sufficient high enough value, it will cause the diode's PN junction to overheat and fail due to the avalanche effect around the junction. This may cause the diode to become shorter or shorted and will result in the flow of the maximum circuit current, and this is so as a step downward slope in the reverse static characteristics curve below. So reverse characteristics curve for the PN जंक्शन डायोड। नॉर्मली अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे रिवर्स बाइस में तो हमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट में एक करंट मिलेगा जिसको हम माइक्रो एम्पियर से मेजर करेंगे, बट अगर हम और बढ़ाते जाएंगे तो जो डायोड है वो एक पॉइंट पे आके शॉर्ट सर्किट हो जाएगा या ब्रेक हो जाएगा। उस कंडीशन या उस पॉइंट को आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन, रिवर्स ब्रेक डाउन रीजन, जिसमें कि हम और करंट बढ़ाएंगे तो हमारा जो डायोड है वो शॉर्टेड हो जाएगा और वर्क नहीं करेगा, तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स ब्रेक डाउन रीजन। Sometimes the avalanche effect has practical application in the voltage stabilizing circuit, where a series limiting resistor is used with the diode to limit this reverse breakdown current to a precise maximum value, thereby producing a fixed voltage output across the diode. These type of diode are commonly known as the Jenner diode. Now the third condition is a forward bias PN junction.
When a diode is connected in a forward bias condition, a negative voltage is applied to the N-type material and the positive voltage is applied to the P-type material, means P connected to positive side. If this external voltage becomes greater than the value of the potential barrier, approximate 0.7 volt for the silicon and 0.3 volt for the germanium, the potential barrier opposition will be overcome and current will start to flow. So diode work like as a closed switch in this condition. This is because the negative voltage pushes or repels electron towards the junction, giving them the energy to cross over and combine with the hole being pushed in the opposite direction toward the junction by the positive voltage. The result in a characteristics curve of the zero current flowing up to this voltage point called the knee on the static voltage or static curve, and then a high current flow through the diode with little increasing in the external voltage as so below. Forward characteristics curve for the PN junction diode. So this is the curve for forward bias PN junction diode. The application of the forward biasing voltage on the junction diode result in the depletion layer become very thin and narrow, which represent a low impedance path through the junction, thereby allowing the high current to flow. Normally क्या होता है कि जैसे ही हम बैटरी के पॉजिटिव को पी रीजन से कनेक्ट कर देते हैं तो पॉजिटिव में अपोजिशन होता है और होल्स जो होते हैं वो जंक्शन की ओर मूव होते हैं. सिमिलरली एन में नेगेटिव को हमने एन टाइप से कनेक्ट किया हुआ है तो दोनों में रिपल्शन होगा, दोनों जंक्शन की साइड मूव करेंगे, जिससे कि हमारा जो डिप्लीशन लेयर है वो बहुत ही नैरो बनती है और हमारा डायोड में जो है करंट कंडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है. तो ये हमारा कर्व है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का. फॉरवर्ड और रिवर्स जब हम दोनों कर्व को ऐड कर देते हैं तो इसी को हम आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड बोलते हैं, जो कि अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. तो नॉर्मली जो हमारा वोल्टेज होता है कट इन वोल्टेज होता है, जो कि सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है और जर्मेनियम के लिए 0.3 होता है. तो 0.7 तक हमारा जो वोल्टेज बढ़ाने पे जो करंट है बहुत ही कम इंक्रीज होगा और जैसे ही हमारा नी वोल्टेज आएगा, नी वोल्टेज इसको हम बोलते हैं 0.7 फॉर द सिलिकॉन एंड 0.3 फॉर जर्मेनियम. तो जैसे ही 0.7 हमारा बढ़ेगा उसके बाद अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो करंट हमारा फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है. तो ये आप कर्व में बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं. The point at which this sudden increase in the current take place is represented on the static IV characteristics curve above as the knee point. Now the reduction in the depletion layer due to the forward bias. This is a diagram. आप diagram में देख सकते हैं कि हमने P रीजन को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ है और N रीजन को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है. जब इस तरीके से हम कनेक्शन करते हैं तो इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बाइस ऑफ द PN जंक्शन डायोड. अब फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं उसमें डिप्लीशन लेयर जो होता है बहुत ही स्मॉल बनता है. आप डायग्राम में देख सकते हैं. सो दिस इज द प्रैक्टिकल डायग्राम और दिस इज द सर्किटरी डायग्राम फॉर द फॉरवर्ड बाइस. और फॉरवर्ड बाइस में जो डायोड है वो एक्ट करता है एज अ closed switch की तरह. We will move the next slide. So the condition represent the low resistance path through the PN junction, allowing a very large current to flow to the diode and with only a small increase in the bias voltage. The actual potential difference across the junction or the diode is kept constant by the action of the depletion layer at the approximately 0.3 volt for the germanium or approximately 0.7 volt for the silicon junction. Since the diode can conduct infinite the current above this knee point as its
effectively become a short circuit. Therefore, resistance are used in a series with the diode to limit its current flow. Exceeding its maximum forward current specifications cause the device to dissipate more power in the form of heat than it was designed for, resulting in the very quick failure of the device. The next topic is the IV characteristics of diode. So this is the IV characteristics of the PN junction diode. These characteristics plot between the two parameters like the current and the voltage. So this is called the IV characteristic. एक्चुअली ये कैरेक्टरिस्टिक जो हमारी प्लॉट होती है वो डायोड करंट और वोल्टेज के बीच में प्लॉट होती है, इसलिए हम इसको आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। ये दोनों ही कंडीशन हम देख चुके हैं। पहले हमने फॉरवर्ड बाइस की जो आप ऊपर देख पा रहे हैं और दूसरा रिवर्स बाइस जो आप नीचे देख पा रहे हैं। तो नॉर्मली ये कंडीशन आती कैसे या कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनती है, जब हम पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तब हमारा फॉरवर्ड वाइस का जो है वो कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ होती है। हमने प्रीवियस वाली स्लाइड में देखा हुआ है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपको समझने वाले पॉइंट है, वो है नी वोल्टेज, जो कि जर्मेनियम का होता है 0.3 और सिलिकॉन के लिए 0.7। इसके बाद ही जो डायोड है वो हमारा वर्किंग करना स्टार्ट करता है। अब जब हम रिवर्स बाइस में आएंगे तो हमारा होता है रिवर्स ब्रेकडाउन और एवलांच रीजन। ये कब आता है, जब हम वोल्टेज को रिवर्स में बढ़ाते जाते हैं। तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब हमारा जो डायोड है वो शॉर्टेड हो जाता है, उस कंडीशन या उस पॉइंट को हम बोलते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज और एवलांच रीजन। सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आप इसको बहुत अच्छे से स्टडी करना है सभी को। नाउ so next we will move to the next topic, the applications of the diode in a different areas. So following are the applications and use of the diode. Number 1, diode used as a rectifier, means it is used as a half wave as well as the full wave rectifier. In the next lecture we will discuss about this topic, diode used as a rectifier. Next, diode is a clipping circuit. It is also used as a clipping circuit. It is also used as a clamping circuit. Clipping and clamping, both the devices, the diodes are used. Diode used in a logic gates also, and it is also used in reverse current protection. So this is the sum of the example of the applications of diode. Diode is used many of the applications, many of the areas or many of the devices. So there is some example of the application of the diode. So this is all about the PN junction diode. In the next lecture we will discuss about diode act as a rectifier circuit, like half wave rectifier and full wave rectifier. And thank you everybody for watching this video.